and it's important to read the instructions also. You should spend about 20 minutes on questions 14 to 26 which are based on reading passage 2 below. Okay, let's start it. Now this passage has been divided into small paragraphs with the names on it, A, B, C, D, alphabetically they are named it. Now let's look at the type of question we have here. We have 3 types of questions. Three types of questions we have. First is, which paragraph contains the following information? Okay, finding the information is the type of question we have. Reading passage 2 has 6 paragraphs, A to F. Okay, second type of question we have in this passage is, here it is, match each research finding with the correct researchers. Okay, we have this kind of list of researchers and these are the options here. And उसके बाद देखिए आप third type of question. I am switching my video into Hindi also because मेरे एक व्यूवर ने मेरे को बोला कि मैम इसको आप हिंदी में भी ट्रांसलेट करो साथ साथ में. So I am trying this video. Okay, let's see it. Oxytocin research. Okay, this is complete the summary below. So we have 3 kinds of questions, 3 types of questions in this passage only. Okay, let's start it. My first strategy is to read the instructions for the questions. Yes, we have already read out. सेकेंड इट्स, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको ये NB जहाँ लिखा होता है उसको इम्पॉर्टेंटली पढ़ना है. यू मे यूज़ एनी लेटर मोर देन वंस. ओके, वो ये बोल रहा है, राइटर ये बोल रहा है कि A to F जो पैराग्राफ्स के जो नेम है उनमें से हम किसी भी अल्फ़ाबेट को, किसी भी एनी लेटर को हम 2 बार यूज़ कर सकते हैं. जब इन्होंने ये लिख दिया है, इफ़ दे हैव रिटन इट हेयर इन NB देन यू मस्ट श्योर, आपको पक्का मतलब ये आपको पता चल जाएगा कि हाँ कोई भी एक लेटर ऑफ कोर्स 2 बार आनी ही आनी है. नाउ अभी हमारे पास ये 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं. अब स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होती है कि कौन सा टाइप का क्वेश्चन हमें पहले करना है. क्या हमें ये फाइंडिंग द इंफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन पहले करें, या ये लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स वाला करें, या फिर ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला पहले करें. मैं ये कहूँगी, मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि आपको क्वेश्चन जिस सीक्वेंस में जिस ढंग से दिए हुए हैं, नंबर वाइज जो भी नंबर दिया हो उसी नंबर में आपको करना है. इधर से उधर ना जाएं. रीज़न इज कि अगर आप इसको करने बैठेंगे, सपोज इफ़ यू स्टार्टेड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हेयर, लेट्स सी इट, you have to read all these researchers and you will try to find for these 3 questions only. Okay, so if अगर आप पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हो तो ऑफ कोर्स आप 4-5 पैराग्राफ्स तो पढ़ोगे. जितने अपने पास 6 पैराग्राफ्स है तो ऑफ कोर्स यू कैन रीड 6 ऑल्सो. बट मैं यही बोलूँगी कि आप ये इनके लिए अगर आप 5-6 पैराग्राफ पढ़ लेते हो तो ये वाले आंसर्स ढूंढने बहुत ईजी हो जाते हैं. एज वेल एज, और जो ये वाला जो पोर्शन है, राइट द समरी बिलो, लास्ट क्वेश्चन जो होता है उसको तो ढूंढना ही बहुत ईजी होता है. बट वन थिंग, इफ़ यू स्टार्ट विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, कंप्लीट द समरी बिलो, एंड दिस इज ऑक्सीटोसिन रिसर्च. जो these types of question you will find in 1 or 2 paragraphs. Though they are having 6 question, हालांकि ये 6 questions include करता है, but this type of questions will include only 2 paragraphs, 1 or 2 paragraphs. But for finding this question, first type of question and 2 question and second type of question we have, आपको you have to read the almost full paragraph. So instead of starting from here, you should start your questions on the number wise, from the number wise only. Okay, let's start it. First, these are the instructions here, and we have already aware about the types of questions in this reading. Okay, let's read it. Question number 14. A reference to research showing the beneficial effects of oxytocin on people. Okay, this word will come in the whole paragraph. Let's look at research. After reading the question, you have to read it twice. मैं ये कहूँगी कि इसको 2 बार पढ़ना है. 2 बार पढ़ के आप उसका मीनिंग निकालना है. मीनिंग निकालोगे तभी आप उसको समझ पाओगे और तब आप उसको मैच कर पाओगे उस पैराग्राफ में, पैसेज के अंदर. So reference to research,
this is the keyword here. Reference to research showing the beneficial what? Beneficial effects. For effects we may get some other kinds of words like advantages we can get. Okay, and research may be, you know, scientific research or lab research or some studies. Research may be not necessary research are including only research are done only in lab only. It may be possible research जो है वो books में भी होती है, studies में भी research होती है. So first we will be looking for research and beneficial effects. Okay, let's look from the first paragraph A. Okay, let's read it fast. First, what are the keywords? Research and beneficial effects. Okay, we will be looking for that only. Various studies. Okay, let's underline it. It was through various studies focusing on animals and scientifics. Okay, scientists. Yes. Okay, it may make, however, okay, new wave of studies. Again, studies has come word. Instead of using research, the writer is using word studies. Has shown that its effects, yes, effects also here. Yes, same it is, we got the word effects here. Very greatly depending on the person and the circumstances, and it can impact on our social interaction for worse as well as for better. Okay. Let's read the information. Reference to research showing the beneficial effects of oxytocin on people. Research showing, okay, its effect very greatly depending on the person, but here it is not given any beneficial effects. Let's read it. Okay. It was through various studies focusing on animal became aware. They discovered it helps the bones that sheep. It is also released by, okay, few chemicals, has a positive a reputation. Positive is also a beneficial, but nothing is given about effects, which is sometimes referred to as love hormone. On sniff, it is claimed make a person more trusting, emphatic, generous and cooperative. It is time, however, to revise this wholly optimistic view. Okay, let's read it. Reference to research showing the beneficial effects of oxytocin on people. Let's read the next one. Oxytocin's role in human behavior first emerged in 2005 in a groundbreaking experiment. Okay, volunteers to do an activity in which they could invest money with an anonymous people who has not guaranteed to be honest. The team found that participants who had sniffed a nasal spray beforehand invested more money than who received a placebo instead. The study was the start of research into the effects of oxy on human interactions. Yes, I think we are very near to this question. Reference to research showing, yes, we got the word showing also, the beneficial effects. Okay, let's read it further. Okay, now everyone is interested. Those follow-up studies have shown that people become more charitable. Yes, these are the positive results. These are the beneficial effects. Better at reading emotions or on others' faces, and at communicating constructively in arguments. Okay, so positive aspects of our social nature. Today the results fueled the view that oxy universally enhanced the positive aspects of social nature. So according to my research, according to my finding, it's B. It is clearly given. यहाँ पे इसको research showing the beneficial effects, यहाँ इसमें बिल्कुल अच्छे से दिया है. ओके, यहाँ से पढ़ते हैं, चलो. ओके, here the study was the start of research into the effects of, ये मेन जो ये वाली जो लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा यूं का यूं क्वेश्चन से उठा के दिया है. ए रेफरेंस here means किसी चीज़ को बताना.
to research showing the beneficial effects of oxytocin on people. The study was the start of research into the effects of oxytocin on human interactions. Okay, आगे for 8 years it was quite a lonesome field. Now everyone is interested. These follow-up studies have shown that after a sniff of the hormone, people become more charitable, better at reading emotions on others' faces, and at communicating constructively arguments. Positive aspects also they are talking. It means our answer is B. ये मेरे जैसी गलती मत करना, प्लीज डोंट डू दीज मिस्टेक्स. I am writing it on question paper, but you don't have to write on question paper. You have to write on the answer sheet. आपको आंसर शीट पे ही लिखना है. प्रैक्टिस करते हो चाहे आप क्वेश्चन पेपर में, एग्जामिनेशन हॉल में, इस पे मत लिखना. साथ के साथ आंसर शीट को ऐसे उठाया और जैसे 1 है 1 के आगे आपने B डाल दिया साथ के साथ. ऐसे आपकी मिस्टेक नहीं होगी बाद में ट्रांसफर करने में. कुछ भी नहीं करना बाद में आपने. Next 15th is reasons. Okay, now reasons. We will be getting the another word or another synonyms for this word reasons. Why the effects of oxytocin are complex? Yes, complex is important word. Why the effects of oxytocin are complex? Okay, let's read the further. In A, there was nothing like this. The effects of oxytocin are complex. And in second also, okay, let's read the C paragraph, and of course first 2 lines it is important to read for this. Then after a few years, contrasting findings began to emerge. Contrasting findings. Okay, volunteers played a competitive game. Those who inhaled the hormone showed more pleasure when they beat other players and felt more. Okay, let's read it in the end. But only if they are not very socially adept to begin with. Her research also shows that oxytocin in fact reduces cooperation in subjects who are particularly anxious or sensitive to rejection. Okay, I think there is nothing is given about the complexity. Reasons why the effects of, they are talking about some reasons why the effects of the oxytocin are complex. Let's read to the next type of next paragraph, that is D. Another discovery. Okay, another discovery they are talking. Writer is explaining that oxytocin effects vary depending on who we are interacting with, but they are not talking about complexity. Reasons. Studies, let's read it further. उसको थोड़ा और आगे पढ़ते हैं. Revealed that the people who had received a dose of oxytocin actually became less cooperative when dealing with complete strangers. Okay, Dutch man became, this is the example, no need to read. People, okay, drives people to care for those in their social circle and defend them from outside dangers. So it appears that oxytocin strengthens biases rather than promoting general goodwill as was previously thought. Nothing is given about it. So next, let's read it. There were signs of subtleties from the start. Bartz has recently shown that in almost half of the existing research results, oxy influenced only certain individuals or in certain circumstances, where once researchers took no notice of such findings. Now in more nuanced understanding of oxytocin's effects is propelling investigations. Okay, let's read it further. Let's look at the last 2-3 sentences. She believes that oxy acts as a chemical spotlight that shines on social, okay, people, social, why it makes more to look others, improve our ability to identify, but it could also make things worse for people who are overly sensitive or prone to, okay. In this paragraph I couldn't find anything about this question. Where is the question? Okay, here, reasons why the effects of oxytocin are complex. Okay, now we have left with one paragraph only. Okay, perhaps we should not be surprised that oxytocin story has become more perplexing. Perplexing is something similar to complex. The hormone is found in everything. Let's read it.
The hormone is found in everything from octopuses to sheep, and its stretch. It is very simple and ancient molecule that has been co-opted for many different functions. Okay, it affects primitive parts of the brain like amygdala, so it's going to have many effects on just about everything. Okay, next is probably does some very basic things, but once you add your high order thinking and social situations, these basic processes could manifest in different ways depending on individual differences and context. Yes, we found this question. We found हमें मिल गया है इसको reasons why the effects of oxytocin are complex is here, it is given. Perhaps we should not be surprised the oxy's story has become more perplexing, and here it is given from here it affects primitive parts of the brain like this thing, so it's going to have many effects on just about everything. So in the last line we can read, हम इसको पढ़ सकते हैं, high order thinking and social situations, these basic processes could manifest in different ways depending on individual differences and context. अगर आपको किसी क्वेश्चन पे अटक जाते हो, मैं तो यहाँ आपके प्रैक्टिस करवा रही हूँ, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट अगर आप अटक जाते हो, आपको पूरा ही पढ़ना पड़ रहा है, तो साथ साथ में आपने जैसे जैसे हम लोगों को बीच में जैसे ये इस राइटर का नाम मिला, हम इसको अंडरलाइन करते जाएंगे, ठीक है. साथ में we have to underline the researches because we already know we have this type of questions ahead. आगे हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन है, तो बेटर है हम साथ साथ में इन पर्सन्स को, जैसे ये यहाँ था भारत, तो इनको हम अंडरलाइन करते जाएंगे. जैसे सेम हेयर, यहाँ हेयर स्यू कार्टर, इसको साथ साथ में आप पढ़ भी रहे हो बिकॉज स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चंस मिलना डिफिकल्ट होते हैं, उसके बाद तो आपको सब कुछ इजीली मिलता जाता है. Let's move on to the next type of question. We have 16. Mention of a period. Okay, period. Yes, I got the clue. Period. In which oxy attracted little scientific attention. Yes, period is something related to time, year. Yes, here. In B sentence, role in human behavior first emerged in 2005 because nothing has given about any time in any paragraph. So it's important to read this paragraph. For this, the team found that participant who had, let's read it, जो ऐसे बीच में जैसे colleagues, university of this ये सब फालतू इतना पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, आप मेन चीज़ों पे आओ. The study was the start of research into effects of oxy on human interaction for 8 years. Yes, 8 years also it is given. It was quite a lonesome field. For 8 years, lonesome field means उसको जो खाली पड़ा हुआ फील्ड था, जिसको किसी ने कुछ मतलब जिस पे कोई रिसर्च नहीं किया. तो क्वेश्चन यहाँ क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन, द राइटर इज आस्किंग mention of a period in which oxy attracted little scientific attention. Now everyone is interested. Here it is given. Before that, for 8 years, no scientist investigation or attention was given for this topic. Now everyone is interested. It means now it is in demand. That time it was not in demand. Mention of a period in which oxytocin attracted little scientific attention. It means this is B again, and this we found in F. So now it proved you may use any letter more than once. As I told you, whenever it is given in NB, you may use any letter more than once. You have to use these any letter, any alphabetical letter for twice. Let's move on to the next type of question. Reference to people ignoring certain aspects of their research data. ओके, ये इम्पॉर्टेंट, ऐसे कीवर्ड्स को आप अंडरलाइन करोगे जिसको हम इजीली ढूंढ सकते हैं, चाहे तो उसका सिनोनिम भी आ जाए, और कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनका हमारे पास जिनको राइटर कोई भी उसका सिनोनिम नहीं चेंज कर सकता. उसका कोई अलग से वर्ड होगा ही नहीं, सिनोनिम वही का वही वर्ड मिलेगा हमें उसमें. सो इन दिस क्वेश्चन वी आर हैविंग दिस रिसर्च डेटा and people reference to people ignoring certain aspects
of their research data. Yes, ignoring word I got. अगर आपने अब जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन के लिए फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो हमारे यहाँ थे, इनके लिए हमने और इस सेकंड के लिए हमने ऑलमोस्ट सारा ही पैसेज पढ़ डाला. अगर आपने इतना पढ़ा है तो साथ साथ में थोड़ा थोड़ा कुछ तो मीनिंग समझ में आया ही होता है. तो अब ये वाला जो वर्ड है, आई एम श्योर मैं बिल्कुल ठीक जा रही हूँ. रेफरेंस टू पीपल इग्नोरिंग सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द रिसर्च डेटा. पहले मैं इसको भी ढूंढूंगी और इसका सिनोनिम ऑफ कोर्स मैंने पढ़ा था कहीं पे, मैं इसको ढूंढती हूँ. तो इसको पढ़ते हैं. हेयर, यहाँ पे मैंने पढ़ा था कहीं पे, इग्नोर समथिंग कुछ था. नो अटेंशन इज गिवन. Yes, no notice. Yes, as I told you, no notice, took no notice of such finding. Such finding is what? Such finding is research data. Okay, let's read it from here. There were signs of these subtleties from the start. Barthes has recently shown that in almost half of the existing research results, research data, it means research data, it is used in question paper. Question paper में instead of using this word, the writer has used, writer ये वाला word use किया हुआ है. ये हमारे ऊपर है कि हम उसको कितनी जल्दी सिनोनिम उसका इजी उसके अदर वर्ड्स कैसे ढूंढ लेते हैं. अगर हमें अगर ये आर्ट आती है तो आपको रीडिंग पैसेज ढूंढने में कोई डिफिकल्टी नहीं है. बट उससे भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट आर्ट है फोकस ऑन योर रीडिंग पेपर. उस टाइम पे आपको कुछ नहीं सोचना, आपको सिर्फ रीडिंग के बारे में ही सोचना है कि मुझे इसको 15 मिनट में कंप्लीट करना ही करना है, कुछ और नहीं सोचना है. सो यहाँ पे क्या लिखा है, वेयर वंस रिसर्चर्स टुक नो नोटिस ऑफ सच फाइंडिंग्स, नाउ ए मोर नाउंस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑक्सी इफेक्ट्स इज प्रोपेलिंग इन्वेस्टिगेशन डाउन न्यू लाइन्स. ओके, लेट्स लुक एट द क्वेश्चन. हियर द स्टेटमेंट इज सेइंग, क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या बोल रही है, रेफरेंस टू पीपल इग्नोरिंग सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ देयर रिसर्च डेटा. सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बन जाएगा फिर, वेयर वंस रिसर्चर्स टुक नो नोटिस ऑफ सच फाइंडिंग्स. ओके, लेट्स अब इसको हम लगा देते हैं ई. दिस इज ई. सो अभी हमने फाइंडिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इसको ढूंढने के लिए ऑलमोस्ट हमने मतलब मोटा मोटा हमने सारा पैसेज पढ़ ही लिया है. अब मेरे को अब जो बात ये है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसको करने के लिए हमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी. और उससे भी बड़ी बात, हम जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है वो तो हम इजीली कर पाएंगे. लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. लुक एट द फॉलोइंग रिसर्च फाइंडिंग, क्वेश्चन 18 to 20 एंड लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स बिलो. ओके, people, let's read it. People are more trusting when affected by oxytocin. Oxytocin increases people's feeling of jealousy. Yes, I got this, I come across this word jealousy वाला कुछ था. The effect of oxytocin varies from one type of person to another. Okay, let's read the list of researchers and first one is Marcus Heinrich. Marcus Heinrich. अब इनको हमने कैसे सॉल्व करना है, एक राइटर उठाओ, एक रिसर्चर उठाओ और उसका नाम ढूंढो और नाम ढूंढ के जो इन्वर्टेड कोमा में जो भी कुछ लिखा है उसी में आपका आंसर मिलेगा. मोस्टली उसी में ही. अब पहले उसका नाम ढूंढ लेते हैं. कहाँ था वो, मार्कस हेनरिच. where, yes, here it is, Marcus Heinrich and his colleagues at the University of this thing asked volunteer to do an activity in which they could invest money with an anonymous person who was not guaranteed to be honest. देखो जैसे मैं अभी इंग्लिश इसको सेंटेंसेस को फटाफट पढ़ रही हूँ, ऐसे ही आपको उससे भी तेज स्पीड से पढ़ना है क्वेश्चन पेपर में. और मैं तो अब लाउडली पढ़ रही हूँ बिकॉज वीडियो बन रही है, बट आपको वहाँ पे माइंड में पढ़ना है. अगर आप जोर के पढ़ते हो तो टाइम ज़्यादा लगता है, अगर आप बिल्कुल माइंड में पढ़ते हो तो टाइम बहुत कम लगेगा आपको पढ़ने में. In which they could invest money. Okay, the team found that participant who had sniffed nasal before and invested, because मैं इसको ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ, मैं इसको मोटा मोटा पढ़ूंगी जल्दी जल्दी फटाफट स्किम करके. Who received the study was the research of effects into, okay, where is the inverted comma for this? Okay, Marcus. Okay, let's read it. The study was the start of okay, for 8 years it is in, okay, for 8 years it was quite okay. Heinrich
same Heinrich recalls, now everyone is interested. These follow-up studies have shown that after sniffofarmine, people become more charitable, better at reading emotions on others' faces, and at communicating. Okay, the results fueled the view that oxytocin universally enhanced. It means increased the positive aspects of our social nature. Let's look at the question. People are more trusting when affected by oxytocin. Here it is given: more charitable, better at reading emotions on others' faces, and communicating. This thing from here to here we can get the clue of more trusting when affected by oxy. So here the writer is names is राइटर का नाम यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी उसके व्यूज दिए हैं. तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ के अच्छे से, जैसे यहाँ पे लिखा है these follow-up study have shown that sniffofarmine people become more charitable, बेटर एट रीडिंग. ये सब बातें उसकी अच्छाई के लिए लिखा है. मोर ट्रस्टिंग व्हेन अफेक्टेड बाय ऑक्सी. सो इसके लिए हम ए वाला लगाएंगे, ए मार्कस हेनरिच. नेक्स्ट रिसर्चर इज साइमन शेमी टूसूरी. साइमन ओके ये रहा साइमन शेमी टूसूरी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ हेफा इजराइल फाउंड दैट. ओके, जो उसने बोला है उसको फटाफट पढ़ते हैं. When volunteers played a competitive games, those who inhaled the hormone showed more pleasure when they beat others, okay, and felt more envy. ये है jealousy के लिए word use किया है, jealousy. As I told you कि मैंने कहीं पढ़ा था jealousy, तो मैंने of course same word नहीं पढ़ा but ये word पढ़ा तो मुझे उससे कुछ याद आ रहा था कि हाँ मैंने कुछ ऐसा पढ़ा था. तो and felt more envy than when others win. What is more sharply contrasting outcomes depending on a person's disposition. Okay, तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बोल रही है? ऑक्सीटोसिन इंक्रीजेस पीपल्स फीलिंग ऑफ जेलसी. सो और कहीं जाने की जरूरत नहीं है. लेट्स लुक एट दिस. शिमोन शेमे टूसूरी एट द यूनिवर्सिटी ये बातें बता रही है जो कि जेलसी को बता रही है ये चीज़ें. ओके, लेट्स फाइंड इट, लेट्स राइट इट. बी हेयर. ओके, ये हो गया अपना, ये हो गया. नाउ वी हैव लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन. द ऑप्शन इज द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीटोसिन वेरीज फ्रॉम वन टाइप ऑफ पर्सन टू अनदर. स्टेटमेंट को 2 बार 3 बार पढ़ना है, उसका मीनिंग निकालो, उसको ट्रांसलेट अपनी लैंग्वेज में करो. द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीटोसिन वेरीज फ्रॉम वन टाइप ऑफ पर्सन टू अनदर. ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਹੋਰ किसी ਹੋਰ लैंग्वेज ਵਿੱਚ भी ਤੁਸੀਂ कर सकते हो. बट यही कहूँगी कि इसको थोड़ा 2-3 बार पढ़ो. द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीटोसिन वेरीज फ्रॉम वन टाइप ऑफ पर्सन टू अनदर. ओके, नाउ द राइटर इज आस्किंग. नाउ इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट वर्ड है द इफेक्ट. ऑल्सो वी विल बी लुकिंग फॉर फ्रॉम वन टाइप ऑफ पर्सन टू अनदर. येस, फ्रॉम वन टाइप ऑफ पर्सन टू अनदर. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट टाइप ऑफ person. Jennifer Barnes. Okay, where is that person? Yes, from here it is starting his name, but this name has been used throughout the paragraph. Let's look at this. Here also we got, and here also I think no, here also. Let's read it the whole lines wherever we can get this researcher. Okay, let's read it from here. Okay, from here to here it is done. What's more, administrating oxytocin also has sharply contrasting outcomes depending on a person's disposition. Jennifer Barnes from Mount Madison found that it improves people's ability to read emotions, but only if they are not very socially adept to begin with. Her research also shows that oxytocin in fact reduces cooperation in subjects who are particularly anxious or sensitive to rejection. Okay, let's read it from here also. It is also an important line. What's more, administrating oxytocin also has sharply contrasting outcomes. What is this outcome?
outcome here is effects. Effects, its outcome. It means result also, depending on a person's disposition. अगर आपको इसका मीनिंग नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप ये भारत वाले जो रिसर्चर है ये आगे भी दिया है तो इसको भी हम थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते हैं. फाउंड इट इम्प्रूव्स पीपल्स एबिलिटी टू रीड इमोशंस बट ओनली इफ दे आर नॉट वेरी सोशली अडेप्ट टू बिगिन विद. Her research also shows that oxytocin in fact reduces cooperation in subjects who are particularly, okay, let's read it further. Where the name of this Bharts, Mr. Bharts, okay, the name is, these are the, okay, from the start, okay, let's read it. Has recently shown that in almost half of the existing research, okay, influenced only certain individuals or in certain circumstances where once researchers took no notice of such findings. Now a more nuanced understanding of oxy effects is propelling investigations down new lines. The key to understanding what the hormone does lies in pinpointing its core function rather than in cataloging its effect. There are several hypotheses which are mutually, okay, but from here it is given, has recently shown almost half of the existing research influenced only certain individuals or in certain circumstances, okay, took some where once researchers took no notice. From here we can say we have found the answer. The key to understand what the hormone does, okay, she believes could help to reduce, okay, she believes that oxy acts as a chemical flicker, okay, people make this would explain why it makes more in the eye and ability to do this good things for people who are overly in social cues in the worst light, okay. So for this question I'm sure I have got the clue from 2-3 sentences. It is C. As I told you, from here only you can see. Here we got the clue. From till here we were reading about Simone Cheme, okay. What's more, administrating oxy also has sharply contrasting outcomes depending on a person's disposition. Person's disposition is depending from person to person. Here Jennifer from school found it improves people's ability to read emotions but only if they are not very socially adept to begin it. Here in this line also this means the same. So we have already put the answer for this. We have found, we were having, हमारे पास 3 ही ऑप्शन थे और हमने तीनों में ही ढूंढ लिया तो इनको पढ़ने की अब जरूरत नहीं, इनको काटा लगा देते हैं. Let's move on to the next type of question. We have, okay, we have now complete the summary. Oxytocin research. Now let's read about this research. The earliest finding is important. Earliest about oxytocin and bonding came from research involving dash, okay, let's read it from the first paragraph. Is a chemical, okay, produced in the brain. It was through various studies, okay, it was through, it means they are talking about earliest times. Through various studies focusing on animals that scientists first became aware of the influence of the oxytocin is a chemical, okay. They discovered what the question is asking. Question में हमें क्या पूछा है? The earliest findings, okay, about oxy and bonding came from research involving, okay, was through various studies focusing on animals that scientists first became aware of the influence of the, okay. इसमें अगर हमें, okay, before, this is the blank, so before the blank is also important, but now the after the blank is not important here because it is full stop here. So oxytocin and bondings came from the research involving, okay,
हेयर इट वॉज थ्रो वेरियस स्टडीज इज इसकी जगह पे रिसर्च हो गया. द अर्लीस्ट फाइंडिंग्स हुआ इन्वॉल्विंग हेयर मीन्स फोकसिंग ऑन एनिमल्स, सो लेट्स राइट इट हेयर एनिमल्स. वहाँ अगर एनिमल्स दिया तो एनिमल्स ही लिखना है, अगर एनिमल दिया तो एनिमल ही लिखना है. एनिमल्स एस, ये टी नहीं है, दिस इज एल एल एल. इट वॉज ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट ह्यूमन्स प्रोड्यूस ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग डैश. अगर वहाँ पे आप फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसे इतना डार्क लिखोगे और ओवर राइटिंग करके आओगे तो आपके वो मार्क्स कट जाएंगे, आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे. ओवर राइटिंग तो बिल्कुल मत करना. एनिमल्स. नेक्स्ट इज इट वॉज ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट ह्यूमन्स प्रोड्यूस ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग डैश. ह्यूमन्स, नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन्स. ओके, they discovered, yes I got the word discovered word हमें मिल गया है. Let's read it further. That it helps reinforce the bonds between walls which mate for life and triggers the motherly behavior that show towards newborn lambs. Okay, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? It was also discovered, okay, humans produce oxy during dash. Okay, human क्या प्रोड्यूस करता है? टिल हेयर, यहाँ तो बातें हो रही हैं उसकी एनिमल्स की, लैम्स की. इट इज़ ऑल्सो रिलीज, ओके आ गई, ह्यूमन बींग आ गए. इट इज़ ऑल्सो रिलीज बाय वुमेन इन चाइल्ड बर्थ. यस, इट वॉज ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट ह्यूमन्स प्रोड्यूस ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ. देखो डायरेक्टली पूरी फुल की फुल स्टेटमेंट हमें वहाँ पे सेम टू सेम नहीं मिल सकती. ऑफकोर्स हमें ये वर्ड तो मिल गया, इसकी हेल्प से हमें इस क्वेश्चन की लोकेशन मिल गई है, बट उसके बाद हमें कुछ वर्ड्स को स्टेटमेंट में कोई ना कोई वर्ब ऐसी मिलेगी जिसको हम यहाँ ढूंढ सकते हैं. लाइक हेयर, यहाँ पे वी गॉट दिस वर्ब इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्रोड्यूस्ड. हेयर इन द क्वेश्चन इट इज गिवन प्रोड्यूस्ड एंड हेयर इट इज रिलीज्ड. Next is an experiment in 2005 in which participants were given either oxy or a, yes, now they are talking about 2005. What was the experiment? Participants were given either oxy or a, okay, let's read it. What the participant were, here is the participants who had sniffed oxy via nasal spray, okay, who received a placebo instead. Okay, in which participants were given either oxytocin or reinforced the belief that hormone had a positive effect. Yes, effect is here. It means the team founded participants who had sniffed oxy, okay, oxy via a nasal spray beforehand invested more money then is or who received a placebo instead. Who received a placebo, who received a placebo. He see a, and here it is a word a is also given, and instead of using or, writer has wrote the sentence like in another way, like who had sniffed oxy, once they have sniffed oxy, and okay, till here they are talking about oxy through nasal spray beforehand invested more money than those who received, जिन्होंने इसको लिया और जिन्होंने इसको लिया, who received then those who received a placebo instead. okay, ऐसे इसको क्वेश्चंस को ढूंढना है, fill in the blanks को. however later research studies did, this is not the always the case. However, okay, a study at the University of Haifa where participants took part in, okay, अब हमारे लिए लोकेशन ढूंढना इजी हो जाएगा क्योंकि ये इस यूनिवर्सिटी का नाम दिया. अब इस यूनिवर्सिटी के नाम में हमें कुछ भी अलग से कोई भी सिनोनिम नहीं मिलेगा. सबसे पहले टूट पड़ो, इस नाम पर ढूंढ दो. यस, ये रहा मिला. yes, I got this word, University of Haifa. now come to the point where participants took part in a dash, where participants, party, instead of using participants words, the writer has used the word volunteers. Participants,
राइटर ने क्वेश्चन में कुछ और लिखा है कि पार्टिसिपेंट्स, और यहाँ लिखा वॉलंटियर्स प्लेड ए कॉम्पिटिटिव गेम, दोज हु इनहेल्ड द हार्मोन शोड मोर प्लेजर व्हेन दे बीट अदर प्लेयर्स। ओके, यहाँ क्या बोल रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ एफा वेयर पार्टिसिपेंट टुक पार्ट इन ए रिवील्ड द नेगेटिव इमोशंस। ओके, yes, it is participants played a game. Yes, game, here it is, game is answer, took part in a game. आगे revealed is it showed negative emotions. Okay, कॉम्पिटिटिव गेम में उन्होंने पार्ट लिया। दोज हु इनहेल द हार्मोन शोड मोर प्लेजर, उनको ज़्यादा खुशी हुई जब वो किसी को बीट कर रहे हैं, अदर प्लेयर्स को मार रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं, और उनसे खूब जेलसी फील कर रहे हैं जो जीत गए हैं। तो इसका मतलब है रिवील्ड मतलब शोड द नेगेटिव इमोशंस व्हाट ऑक्सी कैन ट्रिगर। नेगेटिव इमोशंस भी उससे आ जाते हैं जो कि वो ट्रिगर करता है ऑक्सी को लेने से। सो पार्टिसिपेंट ने क्या किया, टुक पार्ट इन ए गेम, बट यहाँ पे हमें यूज करना है वन वर्ड, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस में क्या दिया था, लेट्स लुक एट दिस, सॉरी, let's look at this. Here it is given, yes, C paragraph, yes, we were here, yes, competitive game, of course we have to write only one word. The main important word is game. गेम कैसी थी, कॉम्पिटिटिव थी या डल थी या बोरिंग थी या बहुत ही एनकरेजिंग थी, वो अलग बात है, बट हमें मेन इंपॉर्टेंट वर्ड को चूज करके लिखना है, दैट इज गेम। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। नेगेटिव हो गया, स्टडी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ एंटरैप शोड पीपल्स लैक ऑफ विलिंगनेस टू हेल्प। पीपल्स लैक ऑफ, पहले तो इस यूनिवर्सिटी को ढूंढ लेते हैं, एंटीरैप, यस, दूसरा पेज है ये। लेट्स लुक एट द एंटीरैप, यस, एंटीरैप, यूनिवर्सिटी ऑफ एंटीरैप। ओके, व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग नाउ, people's lack of willingness to help, yes, to lack. Okay, Belgium revealed that people who had received a dose of oxytocin actually become less cooperative when dealing with complete strangers. So it means they actually less cooperative, it means they were not helping it, less cooperative and dealing with complete strangers. Willingness to, people's lack of willingness to help is, इसको यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक राइटर ने किस ढंग से लिखा है, lack of willingness to help यहाँ पे लिखा है, who had received a dose of oxy actually becomes less cooperative when dealing with complete strangers. To help strangers, स्ट्रेंजर्स जो है वो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, ना कि कंप्लीट स्ट्रेंजर। वाइल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सी। ओके, मीन वाइल द रिसर्च एट द यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडैम। ओके, अब इस वर्ड को ढूंढ लेते हैं, एम्स्टरडैम कहाँ लिखा है, लेट्स लुक एट दिस, एम्स्टरडैम। ओके जी, यस, यहीं उससे नेक्स्ट लाइन में मिल गया अपने को, इन द नीदरलैंड्स। अब उन्होंने क्या डिस्कवरी की, रिवील्ड दैट पीपल who have been given oxy consider that are familiar to them in their own country. Okay, what they are saying, discovered that volunteers given oxy showed favoritism. Okay, favoritism. Dutch man became quicker to associate positive words with Dutch names, okay, with foreign ones, for example. Okay, people to, let's read at the statement, who have been given oxy considered people who have been considered that are familiar to them in their country to have more positive associations than those from other cultures. Okay, yes, from यहाँ जो है वो बोल रहा है, ये जो volunteers given oxy showed favoritism, Dutch man became quicker to associate positive words with Dutch names than with foreign names. Dutch names, it means वो favoritism किसको कर रहा है, Dutch names, और rather than वो किसी rather than foreign, जो foreigners होते हैं उनकी हेल्प नहीं कर रहा था। Who have been given oxy consider names, वो names के ऊपर ध्यान दे रहा था, names that are familiar to them in their own country to have more positive associations than those from other। देखो उसको ध्यान से देखो, that are familiar,
डच मैन, देखो ये अपना ये वर्ड था, यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडम इन नीदरलैंड्स डिस्कवर्ड दैट वॉलंटियर्स गिवन ऑक्सी शोड फेवरेटिज्म। हाउ फेवरेटिज्म कैसे दे रहे थे वो बता रहा है। डच मैन बिकेम क्विकर टू एसोसिएट पॉजिटिव वर्ड्स विद डच नेम्स देन विद फॉरेन वंस। फॉर एग्जाम्पल, आगे ये एग्जाम्पल दी है। और प्रमोटिंग जो है इसको राइटर ने इनडायरेक्ट वे में ऐसे लिखा है, डैट कंसीडर नेम्स, वो उसको देख रहा था, सुन रहा था, डैट आर फेमिलियर टू देम इन देयर ओन कंट्री, वो डचमैन की जो एग्जांपल दी है, टू हैव मोर पॉजिटिव एसोसिएशन देन दोज फ्रॉम अदर कल्चर्स। अदर कल्चर्स क्या है? देन दोज फ्रॉम फॉरेन वंस, फॉरेन वंस इज फ्रॉम अदर कल्चर, फ्रॉम अदर कल्चर, ये जो लिखा है, ठीक है। इस तरह से हमने सब ढूंढ लिया। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस रीडिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू।